Hello friends, greetings and best wishes on the occasion of this Independence Day. Today we are going to discuss the provisions relating to applicability of tax audit and interplay relating to section 44AB and section 44AD. So the issues that we are going to discuss in this video today are: number 1, let us say my salary income is 40 lakhs. I tried my hands on the stock market. I incurred a loss of 8 lakhs. Now this loss cannot be adjusted against the salary income. Is it possible for me to proceed further without getting my books of accounts audited? And in that case, what will be the due date for audit? Or what will be the due date, for filing the return of income? Number 2, let's say I started my business during this year and this was the first year of my business. I have never ever done business in the past. This is the first year I am into a business. Is it mandatory for me to apply section 44AD, assuming I am an eligible assessee and carrying out eligible business? Is it mandatory for me to offer 8% of the turnover as the income? That is question number 2 that we are going to discuss. Issue number 3. Let us say in the second example, I am not new into the business. I am doing the business since long, but then in the past I have never opted for 44AD. Now is it mandatory for me in this year that I have to opt for 44AD only? That is the third issue. Issue number 4. Let us say that I have opted for 44AD in the past. So applying provisions of section 44AD subsection 4 and subsection 5, I have to mandatorily either opt for section 44AD, or I have to get my books of accounts audited subject to satisfaction of other conditions. Now assume a situation that my turnover exceeds 2 crore rupees, or let's say now 3 crore rupees during this gap of 5 years. Now, am I supposed to get books of accounts audited in those years, assuming that, of course, my turnover exceeds 3 crore rupees, so by all means I fall out of 44AD, but then I meet the 5% wala condition which is there in section 44AB clause A proviso. So in that case, I am not supposed to get my books of accounts audited. So will the punishment granted to me under 44AD bracket 4 and bracket 5 would still be applicable in those particular year, in those particular 5 years where my turnover exceeds the requirement of 2 crore or 3 crore, as the case may be? So this all issues we are going to discuss. And once again, I normally put it this wise whenever I get an opportunity to deliberate on 44AD and AB, that 44AD talks about marriage. Once you are married, you will have to remain married for 5 years. If you decide to take divorce, then you cannot again marry for 5 years. So that's what the 44AD talk about. So once you opt for 44AD, you will have to be in section 44AD for 5 years. And if you decide to move out in those successive in any year out of those successive 5 years, then you'll have to comply with the conditions or the conditions given in the respective sections of 44AD 4 and 5. Are the similar situations applicable to 44ADA or not? So these are the particular issues which have to be dealt with. Okay, one more issue. Let's say Mr. X is a chartered accountant in practice, or Mr. X is a doctor in practice, offering his income 50% of the gross receipt. Let's say his gross receipt is 40 lakhs of rupees. He is offering 25 lakhs of rupees, more than 50% on a presumptive basis. Now he has burnt his hands in the stock market. Is it mandatory for him to get the books of accounts audited or not? So these are the issues which we are going to discuss in this particular video of section 44. In this particular video where we are going to discuss the interplay of 44AB and AD. Let us first start with provisions of section 44AA, so we can have some sort of clarity as regards how the section moves about, and we have got first, let's take some basic clarity and then we move on to the applicability part as well. So let's quickly go to the applicability part. Let me share my screen. I hope my screen is visible to you all. Yeah.
So I am into section 44AA. Section 44AA subsection 1 goes this wise. It says that every person carrying on legal, medical, engineering or architectural profession, or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or any other profession as is notified by the board in the official gazette shall keep and maintain such books of account and other document as may enable assessing officer to compute his total income in accordance with the provisions of the act. And if I read section 44AA subsection 2, every person carrying on business or profession not being a profession referred to in subsection 1 shall. So now if I just restrict myself here, one can clearly understand that the chapter which we discussed, the provision of 44AA falls in the chapter of profits and gains of business and profession. Now business is separate, profession is separate. But then if you look at 44AA subsection 1, it only deals with specified profession. It does not deal with all professions. So now my chapter is divided further into two more iterations. So when I say the activity can be business, activity can be profession. The profession can be further divided into two more iterations. It can be a profession, it can be a specified profession, it can be a profession other than specified profession. So if you are a profession other than specified profession and you are a business, then you fall in subsection 2. But if you are a specified profession, then only you fall in subsection 1. Now what are the specified professions? We have seen in that particular section that they have given a list of the specified professions to illustrate: legal, medical, engineering, technical consultancy, interior decoration, right? So these are the accountancy, these are technical consultancy, these are the particular profession, and other professions as are notified. So which are the professions which have been now notified? The notified profession are film artist, authorized representative, company secretary, and information technology. So there are total 11 professions covered, 7 professions specified in that section and 4 notified professions. So if I am carrying out an activity which is a profession, but then if it falls in this list of 11 activities, then it would be a specified profession. Otherwise, it would be a profession but not a specified profession. Now, a question would come: why this discussion is relevant? Let us quickly go to the section again to have a better clarity on this. Now, let me first take you to 44AB. 44AB says that every person carrying on business, clause number A. Go to clause number B, they say that carrying on profession. Now understand this: 44AA discriminates a profession into a specified profession, into non-specified profession. But if we talk about 44AB, it only talks about a profession. Now, if we go to section 44ADA, which talks about presumptive taxation in case of the professional, they say that notwithstanding anything contained to section 28 to 43C, in case of an assessee being an individual or a partnership firm or a company, individual partnership firm or a firm, other than limited liability partnership as defined in section so and so of the Act, who is resident in India and is engaged in the profession referred to in subsection 1 of section 44AA, meaning thereby 44ADA is applicable only if I am covered into section 44AA1. Now we have to put it this wise, that if I am carrying out an activity, if that activity is a profession, then the limit of audit for section 44AB would be 50 lakhs of rupees. If that is, so this profession may be a specified profession, may not be a specified profession. If it is a specified profession, then I would be eligible for 44ADA subject to satisfaction of the conditions. And if it is not a specified profession, then the benefit of 44ADA, or let's say the issue of 44ADA would really not arise in those particular cases,
But in that case, I will be falling under 44AA2, but then the limit for audit would be 50 lakhs. So now let us talk about the professions which are not listed in that. So let's quickly go to the professions which are given in section 44AA. Section 44AA, which is on your screen, now says that the profession are legal profession, medical, engineering, architectural profession, or profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration. So these are the profession: legal, medical, engineering, architectural profession, profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration, or any other profession as notified. And I talked about the four professions. So now let's talk about the journalism. I have undergone a training. I have undergone a formal education. I got the degree. Now I am acting as a journalist. Being a journalist, I am carrying. I'm certainly I am a professional. Since I am a professional, but not a specified professional, I would be liable to get my books of accounts audited if my turnover exceeds 50 lakhs of rupees, or gross receipt as the case may be exceeds 50 lakhs of rupees, but I will not be eligible to opt for section 44 ADA. Now let's also go. They say that the notified profession are information technology, authorized representative, company secretary, and film artist. Now, if we go to the definition of film artist, which they have given, if we go to Rule 6 app, they define, they talk about what do we mean by film artist. They say that film artist means any person engaged in the product in the professional capacity in the production of a cinematographic film. So let us take an example. Somebody is a singer, but then he is not engaged in the professional capacity in production of a cinematographic film. In that particular case, he might have undergone, we might have taken some formal training for a classical singing, and now the gentleman is a singer. Certainly, he is a professional, but then he is not a specified professional because he is not engaged in the production of a cinematographic film. So similarly, somebody has taken a detailed course in a photography, but then he is, let's say, he's not engaged in the production of cinematographic film. He's carrying out a video wedding photography. Let's take an example. Probably he doesn't fall in the definition of a specified profession. Of course, it is a profession, but then certainly it is not a specified profession. So one has to be clear. We talk about, let's take an example of a specified profession. Even a teaching does not include. So teaching, by all means, it is a profession. Teaching is a profession because it requires an intellectual skill. It may be a manual skill, but then they are controlled by an intellectual skill, and these intellectual skills are derived by a person by undergoing a formal studies. So let's take an example. A gentleman has completed his masters. A gentleman has completed his chartered accountancy, but then he is not in practice. He is actually teaching other CA students. So basically, he cannot be said to be providing a legal services or medical or engineering or architectural profession, or he cannot be said to be providing any kind of a technical consultancy. He's into a teaching services, and teaching is somewhere, in my opinion, not covered over here. So it might be a profession. It is a profession, but then it may not be held to be, in my opinion, a specified profession. So that is what one has to consider. Let's take an example of a translator. Somebody is translating only. His job is to translate a document written into Gujarati into English, or English into some other language. So here the matter came before the ITT, and ITT held that the scope is very much limited. He or she has to only translate it. This translation activity cannot be considered as a technical consultancy. It cannot be considered as any kind of a professional, managerial, or consultancy or technical services imparted by him. So basically, that discussion was with respect to applicability of TDS rate with in terms of section 195 rate with section 9. But then the tribunal said that it is basically, in that particular case, that somebody is carrying out a translating activity. It cannot fall in the category of a technical consultancy. And of course, and then there is no other category which we can see here where it falls. So even if a translating activity one may treat, I mean, this is not, of course, by all means, it is not a business, because the business means trade, manufacture, production, or adventure in the nature of trade, manufacture, or production. It is neither of them. So by all means, it is not a business, in my opinion. It is certainly a profession, but then it cannot be treated as a specified profession. And since it is not a specified profession, 44AA1 will not apply. It will fall in 44AA2, number A. Number B,
44AB talks about only profession, so the turnover limit would be 50 lakhs of rupees, and 44ADA would have no applicability because we have just checked that 44ADA will be applicable only to the professions which are specified under section 44AA1. So that is the first thing which I wanted to have a discussion. So now 44AA1 talks about that every person carrying on a specified profession or a notified profession shall keep and maintain such books of accounts and other documents as may enable assessing officer to compute the total income in accordance with the provisions of this act. We have to go to rule 6F, which talks about books of accounts. I am not going into that particular rule. Now going to subsection 2, which is relevant. They say that every person carrying on a business not being a profession referred to in subsection 1, meaning thereby if you are carrying out an activity which is not a profession referred to in subsection 1, meaning thereby it is not a specified profession, meaning thereby if somebody is carrying out a business or a non-specified profession, then it has to be dealt with which is not covered by subsection 1. So in that case you have to go by subsection 2, and subsection 2 talks about when the books of accounts are required to be maintained. Now if we look at this, so basically one has to be clear about 44AA1, 44AA per se. If we are clear about 44AA, then 44AB and ED interplay would become much more simple and easy to understand. Let's quickly talk about that. 44AA sub 2 has got four clauses, I would say 1, 2, 3 and 4. First clause says that if the income from the business exceeds 10 lakhs, income from the business or profession exceeds 1,20,000 rupees, or his total sale turnover or gross receipts, as the case may be, in the business or profession exceeds 10 lakhs of rupees in any one of the 3 years immediately preceding the previous year. Meaning thereby, look at this, subclause 1 is applicable to a business. Now they do not deal with which category of business they are talking about. It is a generic clause, I would say. It talks about any business that you might be carrying on, and if you are carrying on a business and in the last 3 years, if in any of the years, if the turnover has exceeded 10 lakhs of rupees or your income exceeded 1,20,000 rupees, of course this 120 is to be rated as 250, and this has to be rated as 250, and of course that 10 lakh is to be rated as 25 lakhs of rupees if you are individual HUF. That is what the proviso talk about. Let me quickly go to the proviso. They say that this 1,20,000 rupees, the word 2,50,000 needs to be replaced in case of individual and HUF. So if you are individual HUF, read 120 as 250, and similarly read 10 lakh as 25 lakhs of rupees if you are individual and HUF. So that is what they are given by way of proviso. So the clause number 1, this item number 1 talk about a situation. They say that if you are carrying on an activity, let's say kirana business, let's say you are a plumber, let's say you are doing a kirana business, let's say you are a trader of, let's say you are trading in the law books or doing other trading activity. If you are doing it since years and your turnover exceeds 10 lakhs in any of the last 3 years, or your income from the business exceeds 1,20,000 rupees in any of the last 3 years, you are supposed to get your books of accounts audited. If you are individual HUF, then this 10 lakh has to be rated as 25 lakhs and this 120 has to be rated as 250. So that is what they talk about. Now if you say that no, I am not something that I am doing since last 3 years or 2 years or 1 year, I have started this activity again only in this year, this is the first year where I am doing this. They say that when the business or profession is newly set up, in any previous year, if you expect that your turnover would cross 10 lakhs of rupees or your income would cross 1,20,000 rupees, it's likely to be cross that amount, that you go and maintain the books of account. So now this clause has got nothing to do currently. If we look at if I restrict myself here, if I do not go to clause number 3 and clause number 4, then we will put it this wise, that if you are carrying out an activity, let's say which is a business or which is a profession but not specified in subsection 1, so it can be any profession which is not specified in subsection 1. If you are doing this activity, then you have to get you have to maintain your books of account. We don't talk about audit right now. We talk about only maintaining books of accounts. You'll have to maintain your books of account. If the books of accounts are required to be maintained, if the turnover exceeds 10 lakhs in any of the last 3 years, so if you are carrying on a business since 2 years last, then in any of the last 2 years, if it exceeds 10 lakhs of rupees or income exceeds 1,20,000 rupees, individual HUF 250 and 25 lakhs rupees, you have to put it this way. So then you have to go and maintain. If it is a new business, then do you expect it would do you expect that it would exceed this amount? If yes, then go and maintain the books of account. So that's how the things stop here. But then we can't stop here because we have clause 3 and we have clause number 4 as well.
Now clause number 4 says that if where the profits and gains from business are deemed to be the profits and gains of the assessee under section 44AE. I'm not reading the other sections. And the assessee has claimed the income to be less than the profits or gains deemed to be the profits and gains of his business, as the case may be, during such previous year. Now they say that, see, 1 and 2 we talk about any business, but then they said now I'm talking about a specified business. I talk about 44A. So if you are carrying on a business which is of the nature specified in section 45A, then don't look at clause number 1 and clause number 2. Look at here. I am a specified clause. A specified clause would always prevail over a general clause. So whether if you are carrying out now a business or a profession not covered in subsection 1, then the I would ask a question, is it 44A business? If yes, look at clause number 3, don't look at clause number 1 and 2. Forget about clause number 1 and 2. Forget about what was your turnover in the last 3 years. Forget about what was your income in the last 3 years. Forget about if it is a new business. Forget about a situation that what is going to be or what is the turnover that you are expecting, what is the income that you are expecting in this year. If you are 44A business, nothing doing, पुराना बिजनेस है, नया बिजनेस है, कुछ नहीं देखना है, सीधा हिसाब. अगर आप 44AE में जो आपका प्रिज्यूम्ड इनकम बताया हुआ है उससे कम दिखा रहे हैं, यू हैव टू गो एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर आप उससे ज्यादा दिखा रहे हैं, उतना है उससे ज्यादा दिखा रहे हैं, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. सो 44A वाला बिजनेस, द डायरेक्ट आंसर. नाउ कमिंग हियर वेयर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन subsection 4 of section 44AD are applicable in his case, and the income exceeds maximum amount which is not chargeable to tax in any previous year. Now look at this. Now the fourth iteration is about 44AD. So they say that if 44AD4, when the provisions of subsection 4 of section 44AD are applicable, so the two conditions they talk about, that 44AD bracket 4 is applicable and income exceeds maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year. That is the keyword, any previous. Anyway, we'll come to this any word at a later point of time, but then as of now we talk about that when the provisions of subsection 4 of section 44AD are applicable. So 44AD subsection 4 is applicable, number A, and 44AD subsection 4 is applicable, that is point number A, and the income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year. If these two conditions are being met, then you have to go and maintain books of accounts. So now, considering this facts of the case, if now something comes to me that I am carrying on an activity, now my question number 1 would be, are you carrying on an activity? Can this activity be termed as a business or a profession? The definition of profession is given under section 2, which says that profession includes vocation. So the definition ideally takes us nowhere. Judiciary has interpreted this term. Judiciary has provided that an activity involving intellectual skill or a manual skill which is substantially controlled by intellectual skill, and those skills are obtained by undergoing a formal training or a formal experience, then it would be treated as a profession. Now this profession is further divided into two, specified and non-specified profession. So now the question that precisely is, if you are carrying out an activity, if it is a profession which is a specified, and look at 44AA1, you will be covered by 44AA1, you are not covered by 44AA2. Now if you are carrying out an activity which is a profession not covered above, that is not covered in subsection 1, or you are doing an activity which is a business activity, then you are coming here, and in this particular case you have to decide whether you have to decide whether the books of accounts are to be maintained or not. Now when we come here, once again the iterations which are available to us is, now we cannot simply jump on saying that are you doing a business or regular business. I have to divide this business into the three categories. One is 44AD wala business. So once is a 44AD wala business, second is 44AE wala business, and the third is a regular business. So they say that if you are carrying out an activity which is 44AD, to which the 44AD is applicable, if you are an eligible assessee in doing an eligible business, and 44AD4 is applicable, which talks about that you had opted in the past and now you are moving out. We will come to that section at a relevant point of time. But then let's take an example. So if these conditions are being met, eligible assessee doing eligible business, in the past he has opted for it and now he is opting out. If that is the case
and his income exceeds maximum amount which is not chargeable to tax in any year, in that particular case, he will have to go and maintain books of accounts. So let's take an example. If the gentleman is a private limited company, now we know that the private limited company is not covered by 4480. So a trading activity done by an individual who is resident, then this needs to be tested first from the angle of 4480. But then if there's a private limited company, then this clause has no relevance. This would automatically fall in the general clause. If you have to look at the general clause from the general clause parlance, that whether the turnover exceeds 10 lakhs or not. If you are carrying on an activity which is of the 44A, then look at clause number 3. So this is how you need to decide that whether I am supposed to maintain books of account or not. So please understand and appreciate that here we are not discussing as regards whether the audit is applicable or not. We are first discussing whether books of accounts are required to be maintained or not, because 44 AA subsection 2 has 44 AA subsection 2 has got 4 clauses. So first we need to be clear about that कि मैं कहाँ पर fall हो रहा हूँ, मुझे कहाँ पर land करना है. So let us take a situation that, as I given, let us take an example that if Mr. X is coming to me asking me a question that, sir, I am trading in law books. I am a law book trader. Now, am I supposed to maintain books of account? Then my first question to him would be, sir, if you are doing a trading, the question number 1 is that you are not covered, the first conclusion, you are not covered by 4411. You are going to be covered by 44 AA subsection 2. When you are going to be covered by 44 AA subsection 2, then there are 4 clauses, 1, 2, 3 and 4. One is a regular business which I carry out since long. Second is a regular business which I have started this year. Third is 44A business. And fourth is 4484 plus X, income exceeding maximum amount not chargeable to tax in any year. So there's 4 categories. Now to figure out where do I fall. So the 44A, which is the third category, of course I don't fall because trading in law firm does not fall in 44A, so that goes out. Now I would ask, sir, आप business वर्षों से आप ये business कर रहे हो? हाँ सर, वर्षों से कर रहा हूँ. So technically speaking, when you say वर्षों से कर रहे हो, तो ये नया वाला business चला जाएगा. ये भी निकल गया. अब बचे 2. या तो ये regular business है मेरा, या तो फिर मेरा 4484 में. अब मेरा क्वेश्चन होगा, सर आपको 4484 एप्लीकेबल होता है. 4484 कब एप्लीकेबल होगा? If you opted in 4480 in any of the previous year and now you are opting out, then 4480 would come into the picture. So have you ever opted 4480? आपका भूतकाल क्या कह रहा है, आपकी कुंडली क्या कह रही है, आपका इतिहास क्या कह रहा है, मुझे आपका इतिहास बता दीजिए. अगर आपके इतिहास में कभी आपने 4480 का सहारा लिया हुआ है, अगर भूतकाल में कभी 4480 की छत्रछाया ली हुई है, तब तो आपका रेगुलर से बाहर निकल के 4484 में आप कवर्ड हो रहे हैं. आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे. यू हैव टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन. पर आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने तो कभी भी भूतकाल में 4480 में नहीं कहा, मैंने 4480 देखा ही नहीं, कभी अप्लाई करा ही नहीं है, या तो मेरा ये पहला साल या पहला नया बिजनेस, तब तो फिर आप रेगुलर बन गए, तब आपको रेगुलर के हिसाब से सोचना. Now let us take an example that same Mr. X comes to me, business, training in law firm. So 4480 subsection 2, 4 items. Of course, this one is 44A वाला चला जाएगा क्योंकि आप you are not into the business effort in 44A, तो ये अपने आप निकल गया. वो बोल रहे हैं कि सर मैं बरसों से ये बिजनेस कर रहा हूँ, तो ये नया बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे थे वो भी निकल गया. अब बात आता है, मैंने मिस्टर एक्स से बोला, सर कौन है? वो बोल रहा है कि जो मिस्टर एक्स है वो बोल रहा है कि सर मैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ. अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तो कभी भी 4480 अप्लाई नहीं होता. Now, private limited company को तो 4480 apply नहीं होता, तो अपने आप ये चला गया, it falls in 4480. The same business falls here, right? Now he says that no, I am an HUF. I am an HUF, and in the past I opted for 4480. So, sir, आप यहाँ पर follow. So, same business may fall in clause number 1 or clause number 4, depending upon the facts, not depending upon the nature of business. I mean, of course, nature of business would have a key role to play, not depending upon, not only depending upon nature of business, but also on the status of the assessee. That is what I'm trying to convey. Let us take an example. Let's take one more example. Let us say that 4480 is applicable to an eligible assessee doing an eligible business. Now, in the last example which I gave, when I say Mr. X is an HUF, he is an eligible assessee. Resident HUF, he is an eligible assessee. When I said he is a company, I said it is not an eligible assessee. Now, eligible assessee and eligible business. Now, let's say the gentleman is carrying out a teaching profession. Now, teaching profession is not an eligible business. It is not a business, it is a profession. Unfortunately, it is not a specified profession. So, of course, when you are carrying out a teaching, you do fall in 44A AA subsection 2. So, any of these 4 activities. So, first is a regular business, old.
रेगुलर बिजनेस न्यू वन 44A एंड 4484 वाला। अब मैं बात कर रहा हूँ पहले से 44A अपने आप चला जाएगा, नहीं है, वो बोल रहा है सर मैं तो बरसों से टीचिंग कर रहा हूँ, तो ठीक है ये दूसरा वाला नया भी नहीं। अब 1 या 4 के बीच में बात आती है। अब Mr. X is an individual, Mr. X is a resident, सब ठीक है, but then you might be an eligible assessee, I have no dispute with that, but then it is not an eligible business. It is per se, it is not a business, it is a profession. So this goes out and you fall over here and you have to maintain books of accounts if the turnover in any of the last 3 years exceed 10 lakhs of rupees. If you're individual, so 25 lakhs of rupees, or income exceeds 2,50,000 rupees. So that is how you need to conclude whether books of accounts are required to be maintained or not to be maintained. Having discussed this, now let me take you to 44AB. So I guess this clears the precise base. How am I supposed to look at a situation whether books of accounts are to be maintained or not? Number of times there comes a question that, sir, my turnover is 1 crore 20 lakhs of rupees. What am I supposed to do? Am I supposed to go and maintain books of account? Am I supposed to get the books of accounts audited? My turnover is between, what is to be done if my limit is 80 lakhs and 1 crore 80 lakhs? We will answer all these questions. So currently I am only answering a question whether books of accounts are to be maintained or not to be maintained. I am not going further. Right now, we are only answering that yes, you have to go and maintain books of accounts, or you are not supposed to maintain books of accounts. 44AA we have studied. Now we are studying 44AB. Then we'll go to 44AD. So we will have a clarity as regards the fact whether books of accounts are to be audited or not, and if they are audited under which clause, 44ABA, ABB, or ABE. That we will discuss when we'll go to 44AB and when we'll study 44AB and 44AD. Let us now quickly go to 44AB. Yes, let's go to 44AB. 44AB reads this wise. Audit of account. Every person carrying on business. So once again you can see every person carrying on business, and this B talks about every person carrying on profession. So an activity which is a profession may not be a specified profession. The every person carrying on profession sell if the gross receipt from the profession exceeds 50 lakhs of rupees in any previous year. If the gross receipt exceeds 50 lakhs of rupees, you have to go and maintain the books of you have to go and maintain books of accounts, and you have to go and get them audited as well. You have to get the books of accounts audited as well. I have purposefully not dealt with a situation of maintenance of books of accounts in case of a profession because it is a very simple situation. That is given in rule number 6F. So I'm purposefully I have not dealt with that about the profession because it does not require any kind of a discussion. One can go through quickly the rule 6F and get a clarity on this. Now I am on to 44AB, which says that every person carrying on a business. So once again, the audit limit is applicable to a person. It goes person wise. Every person carrying on a business sell if his total sale, turnover, or gross receipt, as the case may be, in business exceeds 1 crore rupees in any previous year. Of course, there is a proviso. Meaning thereby, let's take an example. Mr. X is a partner in a partnership firm. He is drawing a remuneration. So basically, even though the remuneration that he draws may exceed 1 crore rupees, or let's say he's a chartered accountant or he's a doctor and he is drawing a remuneration, and that remuneration as a doctor which he is drawing from the partnership firm in which he is a partner, and that remuneration may exceed 50 lakhs of rupees, but then this will not be, because of that he will not be eligible for the purpose of, he will not be liable for the audit under 44AB, and we have got this direct judgment of the Honorable Bombay High Court in the case of the Pariza last year. So it is the business which has to be seen. The business is being carried out by a partnership firm. Business is not being carried out by a particular partner. And of course, when the remuneration received is not considered as the turnover or gross receipt, obviously that particular partner cannot be considered as eligible for the purpose of benefit of 44ADA or 44AD as well, in view of the judgment of A. Anand Kumar Madras High Court that we had, of course, in the last year. So keeping these two judgments in mind, one can say that if you are a partner in a partnership firm drawing a remuneration, let's say 1 crore rupees, then you are not supposed to get your books of accounts audited. Because your remuneration exceeds, because remuneration is not your gross receipt, remuneration is not your turnover. It's not that the partner is carrying out the business. Business is being carried out by the partnership firm. So the turnover of the business is to be seen. A partner, simply because the turnover exceeds that limit, cannot be compelled to get the books of accounts audited. So every person carrying on business, if the total sale, turnover, or gross receipt, as the case may be, in business exceeds 1 crore rupee in the previous year, there is a proviso. If you fall in that proviso, then the limit goes to 10 crore rupees. You are not supposed to get the books of accounts audited.
Now B talks about profession. Now C talks about a situation that if you are carrying on a business of the nature referred to in 44A and you are offering an income which is less than the presumed income, then you have to go and maintain the books. You go and get the books of accounts audited. So which is absolutely in sync with what we have seen in 44AA. We have seen that if you are offering an income which is less than the presumed income under 44A, then you have to maintain. Here they say that you have to get the books of accounts audited. That's fair enough. Now D is now applicable to a profession. Carrying on the profession, if the gross receipt, if the profits and gains from the profession are deemed to be the profits and gains of the profession under section 44 ADA, and he has claimed such income to be lower than the profits and gains, so deemed to be the deemed to be the profits and gains of the profession, and income exceeds maximum amount which is not chargeable to tax. Now look at this. The difference between C and D is, in C, if you are carrying on, I mean, they talk about three business. I am not concerned with 44 BB and BBB as of now, so I talk about only 44A. So in C and D, they talk about a similar, they are on similar line. वो बोल रहे हैं कि बॉस अगर आपने हमने जो इनकम आपका प्रिज्यूम करा हुआ है उससे अगर आप कम इनकम दिखा रहे हैं तो आपको ऑडिट करवाना है. नथिंग डूइंग. अगर आप 44A वाला बिजनेस कर रहे हैं, आप वो बिजनेस कर रहे हैं जिसको 44A अप्लाई होता है, और हमने जो इनकम प्रिज्यूम करा है कि इतना तो होना चाहिए, इतना तो मिनिमम दिखाना पड़ेगा, अगर आप उससे कम दिखा रहे हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरीली ऑडिट करवाना पड़ेगा. सिमिलरली 44AB क्लॉज डी ये बोल रहा है, 44AB क्लॉज डी ये 44AB क्लॉज डी ये बोल रहा है कि अगर आप 44ADA वाला प्रोफेशन कर रहे हैं, और अगर आप 44ADA वाला प्रोफेशन कर रहे हैं और आप प्रिज्यूम इनकम से कम दिखा रहे हो, और यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर दी, एंड ही हैज क्लेम्ड income lower than the profits and gains of deemed to be the profits and gains of the profession, and अब condition नया ऐड हुआ, his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year. और उसकी इनकम कोई भी साल में मैक्सिमम इनकम विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर बढ़ रही है, इफ दैट इज द केस देन यू टू गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट. नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी. फर्स्ट ऑफ ऑल, सी इज एप्लीकेबल टू 44A. वो बोल रहे हैं आपकी इनकम सर क्या है, हमें लेना देना नहीं है, चाहे आप लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप 10 रुपया रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप 20 रुपया रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप 1 लाख रिपोर्ट कर रहे हैं. अगर वो 1 लाख 2 लाख जो आप रिपोर्ट कर रहे हो और हमारे हिसाब से प्रिज्यूम्ड इनकम 5 लाख बन रही है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन भी करने हैं और आपको ऑडिट भी करवाना है. हमें नहीं पता आपकी इनकम 1.5 लाख बन रही है जो बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, उससे कोई लेना देना नहीं. अब यहां पर डी में ये कहा हुआ है कि सर अगर आप 44AA1 वाला स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहे हैं जिसको 44ADA अप्लाई होता है, यानी अगर आप वो एलिजिबल असेसी हैं जिन्हें 44ADA अप्लाई होता है, इफ यू आर एन एलिजिबल असेसी टू विच द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44ADA इज एप्लीकेबल, to which the provisions of 44ADA is applicable, in that particular case, just give me a second, sir, just give me a second. So basically, this is what one has to keep in mind. This is what one has to consider. So C and D, that is the difference. I'm sorry for the interruptions. One has to consider that C and D. So clause number C is applicable to 44A if you are offering less than presumed. You have to get the books of accounts maintained and audited. D talks about if you are carrying on a profession, which is covered by 44ADA. It is covered by section 44ADA. I mean 44AA1 to which 44ADA is applicable. So if let's take an example, अगर आप private limited company है, in that particular case anyway 44ADA has got no applicability. You are individual, you are HUF, you are a firm but not limited liability partnership firm, and you are resident. In that particular case 44ADA would be applicable, and then you should be carrying on a profession referred to in 44AA1, that is a specified profession. अगर आप वो कर रहे हैं
और अगर आपका टर्नओवर, अगर आपका ग्रॉस रिसीट जो है, अगर आप ग्रॉस रिसीट के 50% से कम इनकम दिखा रहे हैं, लेट्स से योर ग्रॉस रिसीट इज 30 lakhs, you are offering 15 lakhs above, no problems. You are offering less than, you are offering less than 15 lakhs, number A, and your income in any previous year exceeds maximum amount which is not chargeable. This is an additional condition. Your income in any previous year exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax. In that particular case, you have to get your books of account, you have to get your books of accounts audited. That's what clause number D talk about. Now look at clause number E. Carrying on the business shall, if the provisions of subsection 4 of 44AD are applicable in this case and income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax in any previous year. So this is, one can see that it is absolutely in line with what we spoke about recently, that is 44AA, what we spoke about. So this is what we spoke, that if you are carrying on a business which is, to which your 4484 is applicable, and 4484 is applicable and your income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, then you have to get your books of accounts audited here. So now once again, like the way we spoke about ki whether we are falling in clause 1 and 2 in 44AA, like we fall in clause 1 and 2 in 44AA, or now here we'll fall in 44ABA or 44 clause number ABE, the same ideology that needs to be applied over here. So that's why I spent some time while talking about 44 ABA. So now once again, let us once again take a situation. Let us take a situation for our understanding. Let's say that I am, once again, let's take an example. Mr. X comes to us. Mr. X says that, sir, I am dealing in law books. I'm a trader. I'm a trader in bricks. I'm dealing in bricks. I'm a trader of bricks. Okay, wonderful. You are trader in bricks. Now the question is that whether sir 44 AA books of accounts maintain करने हैं, 44 AB audit करना है, क्या करना है? So our question is, sir, you are a trader in bricks, right? Or you are a bricks manufacturer. If that is the case, in that case, you don't fall in 44 AA1, you fall in 44 AA2. That is first conclusion. I am clear. Number one. Number two, 44 AA2 has got four possibilities. New business. Regular business I am doing since so many years, right? Then I'll say, what is if the turnover exceeds 10 lakh or 25 lakhs in any of the last 3 years, or 1 lakh 20,000 or 250 income exceeds in any of the last 3 years, then yes, go and maintain. नया बिजनेस कर रहे हो आप, तो क्या आपको लगता है 10 लाख या 25 लाख या 1 20 या 250 से आपकी इनकम बढ़ेगी या टर्नओवर बढ़ेगा, तो ठीक है आप करो. तो तीसरा 44A, चौथा कौन सा है 4484 वाला. अब ये चार बातें होगी. नाउ अब वो बोल रहा है कि सर मैं तो ब्रिक्स मैन्युफैक्चर हूं, मतलब ये चीज हमेशा के लिए खत्म, 44A मेरे को अप्लाई होगा नहीं, आई एम आउट ऑफ 44A. अच्छा, अब वो बोल, मैं पूछ रहा हूँ भाई नया बिजनेस कर रहे हो या पुराना बिजनेस है? अब वो कह रहा है सर मैं तो ये बिजनेस बरसों से कर रहा हूँ. सर अगर आप बरसों से ये बिजनेस कर रहे हैं तब तो आपको तीन चीजें एप्लीकेबल हो सकती हैं. या तो आप 44AD4 में जाएंगे, सॉरी दो चीजें, 44AD4 में जाएंगे अगर आपने भूतकाल में कभी भी 44AD का यूज करा हुआ है तो. अब मैं उनसे पूछूंगा सर आपने भूतकाल में कभी भी 44AD का यूज करा हुआ है? ही वुड से नहीं, मैंने भूतकाल में कभी भी 44AD में नहीं गया. आई हैव नेवर एवर ऑप्टेड 44AD. देन 44AD4 टॉक्स अबाउट दैट ओनली. यू हैव ऑप्टेड इन द पास्ट एंड नाउ मूविंग आउट. सर आई हैव नेवर एवर ऑप्टेड 44AD इन द पास्ट. वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ मूविंग आउट? तो ये भी खत्म. मतलब मैं पहले क्लॉज जो 1 और 2 था उसमें चला गया. अच्छा, आप बरसों से कर रहे हैं तो 2 नंबर भी चला गया, बचा 1 नंबर, तो ठीक है अब आप क्लियर है. अगर जब आप 1 नंबर में चले गए 44AA में, ऑब्वियस बात है तो आप 44AB में भी क्लॉज ए में फॉल होंगे. अब आप पूछ रहे हैं टर्नओवर क्या है सर? अगर आप 1 और 2 में तो आप अपने आप ए में चले गए. अच्छा, क्या टर्नओवर है सर आपका? आपका टर्नओवर आपने बताया कि आपका टर्नओवर 80 लाख रुपए है. ठीक है, 80 लाख है, 1 करोड़ से कम है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, यहाँ पर कोई पूछेगा सर 44AD आते हैं, जब आएंगे तब डिस्कस करते हैं. अभी के लिए हमारा कंक्लूजन क्लियर है. अगर आप 44AA1 और 2 में फॉल हो रहे हैं तो आप 44A और आपका जो एक्टिविटी है वो बिजनेस है तो आप 44AB क्लॉज ए में फॉल होंगे. अगर आप 44AA1 और 2 में फॉल हो रहे हैं और आपका एक्टिविटी जो है वो प्रोफेशन है अदर देन स्पेसिफाइड, तब आप 44AB क्लॉज बी में फॉल होंगे. ठीक है ना? ये चीजें, ये प्राइमरी चीजें, हमारा लिंक सीधा सीधा यहाँ पे बैठ रहा है. लेकिन अगर आपने ये मुझसे कहा कि सर मेरा तो लास्ट ईयर में मैंने 44AD लिया था, मैंने 8% दिखाया था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे थे. अच्छा, इफ दैट इज द केस
तो 4484 एप्लीकेबल हो गया सर, 5 साल के लिए तो आपको मेंटेन करना था, आप बाहर आ गए और आपका इनकम जो है इन एनी प्रीवियस ईयर एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, यू हैव टू गो एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो वंस अगेन 44AB clause E, you have to get your books of accounts audited as well. Now here when you talk about 44AA subsection 2 clause 4, read with उसको हमने सीधा लिंक कर दिया 44AB क्लॉज नंबर ई, आपने उसको डायरेक्ट वहां पे लिंक करा. जैसे वहां पे क्लॉज ई में लिंक करा, वहां पर कोई टर्नओवर की बात ही नहीं. जब आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 80 लाख रुपए, यू हैव टू गो एंड मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो फिर आप एंड यू हैव टू गेट देम ऑडिटेड. अब वहां पर तो कोई बात ही नहीं करी है कि टर्नओवर की बात करी हुई नहीं है. तो अगर आप वहां फॉलो रहे हैं तब तो आपको 44AB क्लॉज ई के अंतर्गत आपको ऑडिट करवाना है, वहां पर टर्नओवर की कोई बात नहीं है. ठीक है ना. अच्छा, अब ये क्लियर होगा कि मुझे 44AB मैं समझ गया 44. अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे 44AD पहले देखना है, क्योंकि 44AB टॉक्स अबाउट if the turnover exceeds 1 crore, the clause A, if the turnover exceeds 1 crore, if the turnover exceeds 1 crore, I'll have to get my books of accounts, I have to maintain my books of, I have to get the books of accounts audited. हाँ, अगर मैं प्रोवाइजो में फॉल कर गया तो 10 करोड़ तक मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. देन तो सॉरी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं, आई एम सॉरी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है. लेकिन 44AD टॉक्स अबाउट एलिजिबल असेसी डूइंग एलिजिबल बिजनेस, और एलिजिबल बिजनेस में बोल रहा है 2 करोड़ रुपए. हाँ, प्रोवाइजो है उसका 3 करोड़ रुपए, प्रोवाइजो में बाद में आता है. तो प्रोवाइजो बोल रहा है कि 3 करोड़ रुपए, तो अब मुझे करना क्या. अब मान लो मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ है, तो व्हाट वुड प्रिवेल, मैं किसको, मेरा नया बिजनेस है, पहला साल है, मैं किसको पहले देखूं. क्योंकि 44AB क्लॉज नंबर ए तो ये कहता है कि भैया ये पहला साल है आपका, तो 4484 में तो आप कवर ही नहीं हो रहे. जैसे आपने पहला साल है, द ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर गाय केम, सर पहला साल है, अभी इसी बार 15 अगस्त आज ही मैंने तो अपना बिजनेस शुरू करा है, एंड आई एक्सपेक्ट my turnover to be 1 crore 50 lakhs of rupees by 31st of March. We said we are more than happy for you that you are achieving such a big beautiful turnover. अब क्वेश्चन ये कि मैं करूं तो करूं क्या. अब 44AA में तो आप बोल रहे हो कि भाई 4484 तो आपको एप्लीकेबल होगा नहीं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की तो कोई दरकार नहीं है वहां पर 44AA. हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन तो मैं नॉर्मल बिजनेस में फॉलो जाऊंगा, वहां पे क्लॉज नंबर 2 जो नया वाला बिजनेस है उसके अंदर जाऊंगा. ठीक है, वहां पर मुझे एक्सपेक्ट कर रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे क्योंकि दैट लिमिट एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीस, तो वहां पे मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे. वहां पे वो बहुत बड़ा क्लियरली वहां पे लिखा हुआ है. वेरी गुड, बहुत 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 क्लियर डिस्कशन है वहां पे बहुत 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 क्लियरली वहां पर लिखा हुआ है. तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे. अच्छा, अब मैं तो एक मिनट, अब मैं 44AB में मैं आता हूँ. 44AB कहता है कि अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने बताया कि अगर आप 44AA के क्लॉज 1 या क्लॉज 2 में फॉलोगे तो 44AB के क्लॉज नंबर ए या क्लॉज नंबर बी में फॉलोगे. बी तब होगा जब प्रोफेशन होगा, अगर प्रोफेशन नहीं है तो फिर वो ए हो जाएगा. तो ट्रेडिंग ऑफ बुक्स है तो ए हो गया, तो मुझे ऑडिट करना पड़ेगा. तो अब तो यहाँ पे बात ही यहाँ पे खत्म होगी, मेंटेन करो ऑडिट करवाओ. अब 44AD बीच में आ गया. 44AD ये बोल रहा है कि अगर 2 करोड़ तक है, मान लेते हैं कि 5% का कंडीशन में नहीं जा रहा है, तो 2 करोड़ तक है, तब तो आपको 8% दिखा दो चल जाएगा, 8% या उससे ज्यादा दिखा दो चल जाएगा, बात खत्म हो गई. तो मैं करूं क्या. अब मैं 8% से मुझे ज्यादा भी दिखाना है और यहाँ पे ऑडिट भी करवाना है, ये तो नहीं हो सकता. दिस कैनॉट बी एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस कैनॉट बी अ केस. So in this case, one has to go for 44AD. अब आपको 44AD 2 करोड़ तक छूट दे रहा है. अगर आप डिसाइड तब कहेंगे सर चिंता मत कीजिए, आप ये कह रहे हैं कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से होगा, जो 1 करोड़ से 2 करोड़ की लिमिट में, और वो लिमिट क्लैश हो रही है, वो आपकी 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 ऑडिट वाली लिमिट 44AD वाली लिमिट जो है वो 0 to 2 करोड़ जा रही है, और ऑडिट वाला 1 करोड़ से ऊपर आपको पकड़ रहा है. तो अब आप कंफ्यूज हो रहे कि 1 करोड़ से ऊपर वो ऑडिट वाला मेरे को पीछे से पकड़ रहा है और 44AD मेरे को आगे से पकड़ रहा है. अब मैं क्या करूं. हम कहेंगे सर एक मिनट, अब जब दोनों की लड़ाई हो तो पहले 44AD को सुनना चाहिए, और 44AD में अगर आप जा रहे हैं, अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि मैं 44AD में जा रहा हूं, मैं 8% या उससे ज्यादा जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है मैं वो दिखा रहा हूं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको 44AD में जाइए. 1.5 करोड़ का आपका टर्नओवर हो गया, आप अपना प्रॉफिट मान लो मिनिमम 8% दिखाना है, या उससे ज्यादा अगर आपने कमाया तो उससे ज्यादा जो एक्चुअल कमाया वो आपको दिखाना है, वो आप दिखा दीजिए, वो वहां पर आप दिखा दीजिए. तब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है ऑडिट करने वाली बात ही नहीं है. आप 44AA और 44AB से सीधा सीधा बाहर चले गए, क्योंकि 44AD में, क्योंकि फिर आपको 44AD में बिल्कुल बताया गया है कि आपको फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं रहेगी. अब बात यहाँ पर यह आती है कि मैंने ये इंटरप्रिटेशन कैसे करा. तो फॉर दैट वी नीड टू गो टू द प्रोवाइजो टू सेक्शन 44AB. लेट्स गो टू द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 44AB फॉर दैट. Yeah, let's go to the proviso. I'm reading this proviso. Provided that
This section shall not apply to a person who declares profits and gains for the previous year. Now read this. This section does not apply. This section shall not apply to a person. This section shall not apply to a person. It shall not apply to a person. This section, which one? 44AB, which talks about getting books of accounts audited. So the section of getting books of accounts will not be applicable to whom? To a person. To a person who declares the profits and gains for the previous year in accordance with the प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 एडी और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 एडीए. अगर आप 44 एडी या एडीए के अंतर्गत अगर आप अपना प्रोफेशन अपना इनकम दिखाते हैं, तब आपको जो है ये आपको प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे, तब आपको ऑडिट वाले प्रोविजन आपको अप्लाई नहीं करेंगे. मतलब उस वक्त आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है. और क्योंकि आप 44 एडी में अब चले गए हैं ना, अगर आप पूछेंगे कि सर ये तो ठीक हो गया चलो भी, लेकिन 44 डबल ए में ऐसा प्रोविजन कहाँ था? ये तो 44 एपी में तो आपने बोल दिया कि ऑडिट नहीं करवाना है, लेकिन 44 डबल ए में कहां पर है? 44 डबल ए में ये प्रोवाइजो कहां पर है कि नहीं? तो सर अब जैसे ही आपने 44 एडी ऑप्ट कर लिया है, तब आप 44 डबल ए का जो नंबर 2 है, जहां पर आप बिजनेस और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन फॉल हो रहे हैं, वहां पर फिर आप रेगुलर वाले बिजनेस के 1 और 2 में फॉल नहीं करेंगे. फिर अपने आप आपको क्लॉज नंबर 4 में देख लो, क्योंकि अब आप 44 एडी वाले हो गए. अब आप 44 एडी वाले हो गए. अगर आप 44 एडी वाले हो गए, तब आपको क्लॉज 4 देखना. क्लॉज 4 कब अप्लाई होता है? जब 44 एडी सबसेक्शन 4 अप्लाई होता है. 44 एडी सबसेक्शन 4 अप्लाई होता है. अगर 44 एडी सबसेक्शन 4 आपको कब अप्लाई होगा? व्हेन यू ऑप्टेड इन एंड मूव्ड आउट. सर मैंने तो मूव आउट करा ही नहीं, अभी तो मैं ऑप्टेड इन ही हूं. जब मैं ऑप्टेड इन ही हूं, तब तो फिर मुझे 4484 अप्लाई नहीं होता. जब 4484 अप्लाई ही नहीं होता है, तो 44 डबल ए 2 ब्रैकेट 4 भी मुझे अप्लाई नहीं होगा. इसलिए 44 डबल ए में भी मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. So this is how one need to interpret this situation. Now having understood this, now let us take any situation. Let us take any situation to decide whether the audit is to be done under section 44 double A. Audit is to be done under section 44 AB clause A or 44 AB clause E. Now let us take a situation. Now let us take a situation that I am a salaried employee. My salary income is 40 lakhs. I have tried my hands in the stock market. This is the first year I tried my hands in the stock market. I did the F&O. The turnover is 40 lakhs of rupees. I made a loss of 30 lakhs of rupees. My salary income is 40 lakhs of rupees. My salary income is 40 lakhs. My F&O turnover is 40 lakhs as per the rules, and my loss is 30 lakhs. Now my 30 lakhs F&O loss cannot be adjusted against my salary income of 40 lakhs of rupees. So I have to offer 40 lakhs as salary income. I have to offer a loss of 30 lakhs of rupees. The question that first comes is, am I supposed to get my books of accounts audited or not? Am I supposed to maintain my books of account or not? Let's quickly go to section 44 AA. Section 44 AA क्या कह रहा है? Section 44 AA मुझे ये कह रहा है कि अगर आप प्रोफेशन में हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में, तो 44 डबल ए सबसेक्शन में, अरे भाई डेरिवेटिव स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं आता. इट इज अ बिजनेस. वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं आता, तो सबसेक्शन 2 में आऊंगा. अब सबसेक्शन 2 में 4 बातें हैं. 4 बातें कौन सी है? अगर आप कोई रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं तो पहला और दूसरा, 44 वाला है तो तीसरा, और 44 वाला है तो चौथा. अब आप उल्टा चलिए, 44 को पहले देखिए. 44 अगर आप 44 वाला है, सर मैंने कभी भूतकाल में अपनी जिंदगी में 44 को छुआ नहीं है, मैंने भूतकाल में कभी बिजनेस करा नहीं है, मेरा पहला साल है कि मैं बिजनेस में घुस रहा हूँ, तो 44 वाला तो मुझे अप्लाई होगा नहीं, मैं बाहर निकल गया, आई एम आउट. 44 तो है नहीं, मैं आई एम आउट. अच्छा, ये मैंने पहली बार, अब ये दो चीजें, क्लॉज 1 बोल रहे हैं कि अगर आप बरसों से कर रहे हैं तो, और क्लॉज 2 बोल रहे हैं ये पहली बार अगर आपने करा हुआ है, और तो ये मेरा तो पहली बार वाला है, तो पहला चला गया. पहली बार अगर आप कर रहे हो तो इंडिविजुअल एचयूएफ है. अगर आपका टर्नओवर 25 लाख से बड़ा, इनकम 25 लाख से बड़ी, ऐसा आपको लग रहा है तो कर दीजिए. ऑब्वियसली मेरा टर्नओवर इस साल का 25 लाख से बढ़ चुका है, 40 लाख रुपए है. भले मेरा इनकम कम है, लेकिन मेरा टर्नओवर 25 लाख से बढ़ चुका है, तो आई हैव टू गो एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट. तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे. यस, आई हैव टू मेंटेन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नाउ कमिंग टू 44 एबी. अब मैंने कहा कि अगर आप 44 एबी क्लॉज सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 या 2 में फॉल कर रहे हैं, और अगर आप बिजनेस है, यू विल बी कवर्ड बाय 44 एबी क्लॉज ए. तो 44 एबी क्लॉज ए क्या कह रहा है? 44 एबी क्लॉज ये कह रहा है कि अगर आप एवरी पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस, इफ द टर्नओवर इन अ बिजनेस एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीस, प्रोवाइड जो 10 करोड़ का है, लेकिन टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ रुपए का, तो आपको ऑडिट करवाना है. भाई मेरा टर्नओवर 40 लाख रुपए ही है, तो मुझे ऑडिट करवाने की जरूरत ही नहीं है, तो मुझे ऑडिट लगेगा नहीं. मीनिंग देयर बाय, इन दिस केस आई हैव टू मेंटेन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स. I have to maintain my books of accounts. My turnover is, my salary income is 40 lakhs,
my turnover is 40 lakhs. In case of F&O, my loss is 30 lakhs of rupees. So I'll claim my business loss 30 lakhs, which will be carried forward. My salary income is 40 lakhs of rupees. I have to pay tax on 40 lakhs of rupees. This is how it will go. But then if I believe that नहीं मैंने तो audit गलती से करवा दिया and I assume that my date of will my date be extended to 30th September if I get the books of accounts audited? The answer is no. The date will not be extended to 30th September. If the date will certainly not be extended for you to 30th September, there are all chances that the loss will be questioned. The carry forward of the loss may be questioned in that particular very situation. However, if let us assume a situation that you may make an application for the condonation of for getting making a request to the commissioner for or to the CBDT for getting your delay condone in filing return of income because you were under an erroneous belief, and that erroneous belief was on account of a reasonable cause. You were guided by somebody, and that was around a reasonable cause, and otherwise you were absolutely prepared to file the return before 31st of July. So your legitimate claim of carry forward should not be denied, and CBDT condones it. Then things may be different. But as of now, if we look at the law the way it stands, in my opinion, the loss may be questioned in that case, unless the CBDT condones the delay in filing the return of income, and then the things would be different. If the CBDT condones the delay in filing return of income, then the things are different. And I would take this opportunity today to make a statement here that CBDT should come up with some clarification on this kind of an issue, because number of assessees or number of consultants are sometimes under a belief that in these cases audit is required to be done. So accordingly the books of accounts are being audited, accordingly returns are being filed post July. So in those cases, because this is a new section, some clarifications are needed. It should be clarified, and like in the case of trust, when they are granting relaxations by extending the time, in those cases, as a one-time measure, some relaxation should be granted to avoid the disputes which are precisely caused on account of certain complications emerging out of the way the sections have been drafted. So with due respect to the authorities, it is just an opportunity I am taking to convey that some clarifications are to be given. So this is how the 4484, this is how we can take a call whether audit is required to be done or not to be done. Now coming to section 44AD, now what does that section 44AD talks about? And now let's quickly deal with some of the provisions of section 44AD. Let me take you to section 44AD first. Here. Now, notwithstanding anything contained in subsection 28 to 43C, meaning thereby section 43B, section 44AD is overruling section 28 to 43C. Now the question that comes is whether 43B is also overruled by 43C or 43B. Now if we look at section 43B, the language of section 43B goes this way. Now one need to compare this language as well for a. Now if one can look at section 43B, it goes this way. Notwithstanding anything contained in any other provisions of the act. Now look at this language. Notwithstanding anything contained in any other provisions of the act. Meaning thereby एक्ट के किसी भी सेक्शन में क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, आई विल प्रिवेल. तो 43 भी बोल रहा है कि मैं पूरे एक्ट के ऊपर प्रिवेल कर जाऊंगा. अब 44AD को अगर आप पढ़ेंगे, ये बोल रहा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन 28 टू 43C, बोल रहा है कि 28 टू 43C के ऊपर मैं प्रिवेल करूंगा. मतलब दोनों बोल रहे हैं मैं एक दूसरे के ऊपर. एक बोल रहा है कि मैं तो सबके ऊपर प्रिवेल करता हूं, और दूसरा बोल रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर तो प्रिवेल कर ही रहा हूं क्योंकि मैंने तो लिखा हुआ है 28 to 43C. Now what would happen? To my mind, 44AD has been inserted after 43B. So when the 44AD was inserted in the statute after 43B, the lawmakers were aware of the fact that there is a section prevailing 43B which talks about notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of the act. अब उसके ऊपर भी मैं 44AD लगा रहा हूँ, और जहाँ पे मेरा इंटेंशन ये है कि स्मॉल टैक्स पेयर को एक हैसल फ्री कॉरिडोर दे देना, एक कि आप आराम से टर्नओवर का 8% 10% जो आपका एक्चुअल है वो दिखा दो, मिनिमम 8% होना चाहिए, उससे ऊपर आप जो कर रहे हो आप दिखा दो, तो हमें आपको कोई दिक्कत नहीं देना, आपको बुक्स मेंटेन नहीं करने, टीडीएस वाला आपको सोचना नहीं है, तो मतलब वो कोई झंझट आपका है नहीं, एडवांस टैक्स में आपको रियायतें देंगे, तो वो आपको रिलैक्सेशन देने का पॉइंट. तो 43B ऑफ कोर्स ये ओवररूल कर रहा है अकॉर्डिंग टू मी, सो इट वुड प्रिवेल ओवर 43B. सो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन सेक्शन 28 to 43C. Once again look at the situation. 43CA is not covered over here. Now 43CA is a counterpart of section 50C which we have in the chapter of capital gain.
So in case of a real estate, in case when a land or building is being sold, which is held as a stock in trade, and if it is being sold for a price less than the jantri value or less than the stamp duty value, which we call about, sometimes it is called guidance value, sometimes it is called the value determined by the tehsildar. If it is being sold at a price less than that, and we don't fall in the proviso, that 10% wala proviso and the things, if that is the precise case, in that case I would like to in that case the 43CA would be applicable. So let's take an example. 1 crore rupee was my jantri value, and I sold it for, let's say, 80 lakhs of rupees. So the 20 lakhs would be added. So this, my 20 lakhs would be replacing my full value of consideration. So my full value of consideration would become this. So this 20 lakh is now going to be added. It won't, in my opinion, straightway 20 lakhs will not be added to the income. It will be added to the turnover, and then the calculation would follow. So let's take an example. Otherwise my turnover turned out to be 1 crore 90 lakhs. And because of this 20 lakh, if I cross 2 crore, then I will be thrown out of section 44AD. That is what one has to keep in mind. So let's now go to here. They say that notwithstanding anything to the contrary contained in section 28 to 43C, in the case of an eligible assessee engaged in an eligible business. So they say that eligible assessee engaged in eligible business. Eligible assessee engaged in eligible business. So you have to be an eligible assessee and you have to be carrying out an eligible business. So unless you are an eligible assessee, or let's say unless you are carrying out an eligible business, 44AD has no applicability. Now we need to understand now what do we mean by eligible assessee and what do we mean by eligible business. So let's quickly go to this, that eligible assessee, the term has been defined in this section. Eligible assessee means an individual into undivided family or a partnership firm who is a resident but not a limited liability partnership. So the person has to be a resident individual, person has to be a resident HUF, person has to be a resident partnership firm. But if the person is a non-resident individual, I'm sorry, if a person is a non-resident partnership firm, or a person is an LLP, or a person is a company, or a person is a trust, then 44AD has no applicability. Similarly, one can say that, similarly, the second condition is that he should not have claimed any deduction under 10A, 10AA, 10B, 10BA, और डिडक्शन अंडर प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6 दैट इज 80 IABIC. तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तब आप एलिजिबल असेसी नहीं है. और एलिजिबल बिजनेस मींस, सो माइंड इट इज एन एलिजिबल बिजनेस. Profession per se is not covered here. So if you are carrying out, so now 44AA subsection 2, which is applicable to a business, and profession not covered about. So of course 44AA2 has got an applicability to business and non-specified profession as well. But then this one 44AD talks about eligible business, and eligible business means, I mean, it nowhere talks about a profession. So even in a business, it divides the business into two categories: eligible business and non-eligible business. So forget about a profession. So if somebody is, as I mentioned, the journalist is not covered here. So if a journalist is also a trader in books, or a journalist is also a trader in bricks, then for a trader in bricks, for trading in bricks, he can very well opt for 44AD because it is an eligible business. But for his journalism activity, he cannot go for 44AB. He cannot go for 44AD because it is a profession. It is of course not a specified profession, but a profession, and profession are outrightly out of this particular activity. So this is what the situation is. Now, an eligible assessee must be doing an eligible business. Now also look at subsection 6, that is most relevant. The provisions of this section, notwithstanding anything contained in the foregoing provision, shall not apply. So ऊपर क्या लिखा हुआ है मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा. और किसको अप्लाई नहीं होगा? shall not apply to whom? To a person. It will not apply 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 to a person carrying on a profession referred to in 44ADA, referred to in subsection 1 of section 44AA. अब समझिए ध्यान से अब दोनों चीजों को. अगर आप 44AA1 वाला प्रोफेशन कर रहे हैं तब तो आपको 44AD अप्लाई नहीं होगा. मतलब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आप लॉयर हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर है, अगर आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आप प्रैक्टिसिंग इंजीनियर है, अगर आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, तो सर 44AD आपके लिए स्टैट्यूट में ही नहीं है. फिर अगर सी आई डोंट गो इनटू द लॉ ऑफ गवर्निंग द रेस्पेक्टिव प्रोफेशन, but let us assume that Mr. X is a chartered accountant and he is doing an F&O. I don't go into the fact that a chartered accountant in practice can fall into F&O or not. Right now I'm not getting into that. But then let's say a chartered accountant अगर तो F&O कर रहे हैं, या डॉक्टर साहब अगर F&O कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब तो 44AA1 में आते हैं, तो उनको
मेडिकल प्रोफेशन उनका प्रैक्टिस के लिए तो 44AA1 एप्लीकेबल नहीं, अब तो उनके लिए तो 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा, पर ये F&O का जो एक्टिविटी है उसके लिए भी उन्हें 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा, उन्हें 44AD बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगा। 44AD उन्हें सोचना ही नहीं है। अगर वो डॉक्टर साहब है और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको मेडिकल प्रोफेशन के लिए तो आउटराइटली नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन विल फॉल अंडर 44ADA। एंड सो फार एज द F&O एक्टिविटीज कंसर्न, वो भी 44AD में फॉल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि लिखा हुआ है नॉटविथस्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फोरगोइंग प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन रेफर्ड टू। मतलब अगर आप 44AA1 वाला प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपको 44AD अप्लाई नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप 44AA1 वाला प्रोफेशन कर रहे हैं तो 44AD आपको उस प्रोफेशन के लिए अप्लाई नहीं होगा। 44AD आपको पूरा का पूरा अप्लाई नहीं होगा अगर आप 44AA सबसेक्शन 1 वाला प्रोफेशन कर रहे हैं। तो अगर आप 44AA सबसेक्शन 1 वाला प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपको 44AD पूरा अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अगर आप मैंने कहा कि जर्नलिस्ट है तो जर्नलिस्ट इज अ प्रोफेशन, बट देन इट इज नॉट अ प्रोफेशन कवर्ड अंडर 44AA1। सो बिकॉज ऑफ दैट it is not an eligible business. That profession is not an eligible business. So 44AD would be applicable to you, but 44AD will not be applicable for that journalism profession. Otherwise it would be applicable. So यार F&O, अगर जर्नलिस्ट ने F&O में काम किया है तो सर जर्नलिस्ट को F&O के लिए तो 44AD अप्लाई हो जाएगा। वो एलिजिबल बिजनेस है, वहां पर वो जा सकते हैं। अगर वो एलिजिबल असेसी एलिजिबल बिजनेस है तो वो 44AD चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं। अगर पहला साल है तो वो उनको अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन वो जर्नलिज्म प्रोफेशन के लिए तो बिल्कुल से नहीं कर सकते, क्योंकि 44 क्योंकि वो प्रोफेशन है, वो कहीं कभी भी एलिजिबल बिजनेस तो है ही नहीं। तो टू फॉल इन 44AD one has to offer 44, one has to do an eligible assessee, one has to be an eligible assessee, and one has to carry out eligible business as well. So one has to be an eligible assessee and one must be doing that eligible business. So unless you are an eligible assessee, unless you are doing an eligible business, and if you are not falling, unless, so basically I would say unless you are eligible, so you have to be an eligible assessee, you have to be doing eligible business, and you must not be caught by 44AA you must not be caught by 44AD subsection 6. If that is the case, then you can think of 44AD. Then 44AD has something for you in the something relevant for you, then you have to read at 44AD. बट अगर आप 44AA1 वाले, ये आपकी कमीशन इनकम है। 44AA1 is 44AD is not applicable, 44AD6 is that मैं applicable नहीं हूँ in case of a person who has got a commission income। अगर आपकी कमीशन इनकम है तो आपको applicable नहीं। सर मैं तो ब्रिक्स का कमीशन भी ले रहा हूँ और जो रेती है उसमें डील कर रहा हूँ, रेती का ट्रेडर हूँ और ब्रिक्स में मैं कमीशन कमा रहा हूँ। तो सर आपको ब्रिक्स के कमीशन क्यों छोड़ दो, पूरे के पूरे आपको, यानी रेती वाले बिजनेस, रेती के ट्रेडिंग में भी, मिट्टी की ट्रेडिंग में भी, या आपको स्टील की ट्रेडिंग में भी, या F&O की ट्रेडिंग में, कहीं पर भी आपको 44AD अप्लाई नहीं होगा। ये सेक्शन बड़ा क्लियरली आपको ये कह रहा है। अब बात करते हैं आगे, एक छोटी सी चीज, छोटा सा कंफ्यूजन जो वहां पर आ रहा है, सब लोग ये पूछ रहे हैं कि notwithstanding anything to the contrary contained in 28 to 43C, in case of an eligible assessee engaged in eligible business, a sum equal to 8% of the total turnover or gross receipts of the assessee in the previous year on account of such business, or as the case may be, a sum higher than the aforesaid sum claimed to have been earned by the eligible assessee shall be deemed to be the profits and gains of business. तो क्या मुझे exact 8% बताना है या मैंने जो ज्यादा कमाया है? सर प्लीज नोट दैट 44AD is not for your benefit. It is for the benefit of revenue. If you earn more than 8%, you will have to show more than 8%. और प्लीज ध्यान से, आप बोलेंगे सर मैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर ही नहीं, मुझे पता कैसे करना है। सर पता तो आपको करना पड़ेगा। बुक्स मेंटेन करने से आपको बोला हुआ है कि बुक्स मेंटेन नहीं करेंगे चलेगा, पर आपको प्रॉफिट तो आपको बताना पड़ेगा कितना। अच्छा, आप अगर 44AD में जा रहे हैं, इट इज योर ड्यूटी टू प्रूव दैट यू आर एन एलिजिबल असेसी, इट इज योर ड्यूटी टू प्रूव दैट यू आर डूइंग एलिजिबल बिजनेस। आप एलिजिबल असेसी हैं, एलिजिबल बिजनेस कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं तो मिट्टी का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तो ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तो गेहूं बेच रहा हूँ, मैं तो फूड ग्रेन्स बेच रहा हूँ, तो मैं तो ट्रेडर हो गया फूड ग्रेन्स का, तो ये मेरा जो पैसा है फूड ग्रेन्स का मैंने ट्रेड करा था उसका पैसा है। तो सर आपको प्रूव करना पड़ेगा। सर आप इंडिविजुअल है तो आपने प्रूव कर दिया, आपने बोल दिया मैं भारत में से बाहर कहीं गया नहीं हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट है तो मेरा पासपोर्ट का कॉपी देख लीजिए, मैं भारत से कभी बाहर गया नहीं तो मैं रेसिडेंट हूँ, आपने ये भी प्रूव कर दिया।
आपने ये भी प्रूव कर दिया कि इन द पास्ट यू हैव नेवर क्लेम्ड एनी अदर बेनिफिट ऑफ आई मीन नॉट इन द पास्ट, इन द ईयर अंडर कंसीडरेशन यू हैव नॉट नेवर क्लेम द बेनिफिट ऑफ चैप्टर 6 और 10A 10AA 10B एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप एलिजिबल असेसी आपने प्रूव कर दिया, बहुत बढ़िया। आपने बोला कि मेरे को कमीशन इनकम ही देखो नहीं है कोई, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ 44AA1 जिसको अप्लाई होता है, या मेरा कोई एजेंसी बिजनेस है तो 4486 में मैं फॉल नहीं हूँ, मैं एलिजिबल असेसी हूँ, मैं 44AD सबसेक्शन 6 में कभी कवर नहीं हो रहा हूँ, तो ये भी हो गया। दूसरा, तीसरा, मैं एलिजिबल बिजनेस कर रहा हूँ, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप फूड ग्रेन का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये प्रूव तो करना पड़ेगा कि मैं फूड ग्रेन का बिजनेस कर रहा हूँ, सिंपली आपके कहने से नहीं माना जाएगा। हाँ, आपको उसके लिए कोई डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। आप शॉप एस्टैब्लिशमेंट ला दीजिए, अकॉर्डिंग टू मी चल जाएगा कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में आप रजिस्टर्ड हैं। अगर आप एपीएमसी का सर्टिफिकेट ला देते हैं कि यार ये एपीएमसी से खरीद रहे हैं या बाहर बेच रहे हैं, आप अपने कुछ डेटा क्रेडिटर का सर्टिफिकेट लाओ कि वी आर रेगुलरली बाइंग एंड सेलिंग, आपने 4-5 लोगों का एफिडेविट दे दिया आपके आसपास वालों का कि भाई ये, तो एक कहीं ना कहीं से एक आधार मिल गया कि आप ये एलिजिबल असेसी एलिजिबल बिजनेस कर रहे हैं और जो पैसे बैंक में जमा हुए हैं वो उसके हुए। अब आप बताएंगे कि सर मेरा ओपनिंग बैलेंस तो बैंक में 5 लाख रुपए था, पूरे साल में बैंक में जमा हुआ है 80 लाख रुपए, हो गए 85 लाख रुपए, अब आखिरी तारीख में मेरे बैंक में 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो सर 50 लाख पड़े हुए मतलब 35 लाख रुपए आपने विड्रॉ करे, चाहे वो बिजनेस के लिए करे, अपने घर खर्च के लिए करे, जो भी करे, तो 50 तो पड़े हुए हैं बैंक में, तो 50 लाख रुपए तो आपका इनकम सीधा सीधा हो गया है। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं तो 80 लाख जमा करे, 80 लाख के 8% दिखा दूंगा 6,40,000, बात खत्म सर, ये नहीं चलेगा। अगले साल जब आप बुक्स मेंटेन करेंगे तब आपका कैपिटल होगा 50 लाख, क्योंकि आपकी बैंक बैलेंस इज 50 लाख। नाउ प्लीज नोट दैट section 44AD is subject to 28 to 43C. It is not subject to 68, 69A, 69B, 69C, 69D. So basically this can be your unexplained investment. This can very well be added. This can very well be added as your unexplained investment, और आपका एडिशन यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है। और असेसिंग ऑफिसर के हाथ यहाँ पर बंदे बिल्कुल नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट देखकर आपको ये नहीं पूछ सकता है कि भाई साहब अगर आपने 5 लाख रुपए ओपनिंग था, 80 लाख रुपए आपका टर्नओवर आप क्रेडिट है बोल रहे हो, 85 लाख हुए, 50 पड़े हुए हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो आपने ज्यादा से ज्यादा 35 लाख खर्च करा हुआ है, तो 50 लाख में मैं मान लेता हूँ 5 लाख आपका ओपनिंग वाला था, तो 45 लाख का तो आपका प्रॉफिट सीधा सीधा है। अच्छा, आपने हवा तो खाया नहीं होगा, तो जो 30 लाख आपने विड्रॉ करे हुए हैं उसी में से तो आपने कुछ खाया होगा, तो मैं मान लेता हूँ 2-3 लाख आपका घर खर्च है, तो 45 + 3 48 लाख रुपीज पे मान लेता हूँ कि आपका इनकम है। तो यू कैन वेरी वेल डू दिस, यू कैन वेरी वेल डू दिस। इट कैन नॉट बी टेकन स्टैंड कि 8% आपका इनकम है, 92% आपका खर्चा है, ये मानना अकॉर्डिंग टू मी इज अ रॉन्ग philosophy. Of course judiciary should come and clarify, and of course I would once again take this opportunity to CBDT should also come and clarify this situation. Now please also note that 44AD अगर आपका ये पहला बिजनेस है, पहला साल है, अभी कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप 44AD अप्लाई करो, जरूरी नहीं है कि आप 8% दिखाओ। अगर आप नहीं दिखाना चाहते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं, आप रेगुलर इनकम दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं। ऑडिट की दरकार तभी होगी जब आप 44AD4 और 44AD5 में आएंगे। अगर आप 44AD4 और 44AD5 आपको ऑडिट अप्लाई आपको टच ही नहीं कर रहा है, तो अब आपको ऑडिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लेट अस रीड नाउ 44AD4 एंड 44AD5 क्विकली। Now let's go to 44AD4. They say that when an eligible assessee declares profit for an assessment year in accordance with the provisions of this section, and he declares profit for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding such previous year not in accordance with the provisions of subsection 1. तो बेसिकली 44AD4 बोल रहा है कि भाई साहब अगर आपने एक बार दिखाया और उसके बाद आप बाहर निकले तो क्या, ये 44AD4 वही बोल रहा है। अब 5 की बात करते हैं, 5 बोल रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, मतलब मुझे आप ऊपर क्या लिखा है लेना देना नहीं है, मैं सबके ऊपर प्रिवेल करूंगा। एन एलिजिबल असेसी टू हुम द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 आर एप्लीकेबल, मतलब जिसको 4 एप्लीकेबल होता है, एंड income and whose total income exceeds maximum amount which is not chargeable to income tax shall be required to keep and maintain books of account and other documents as required under subsection 2 of 44AA and get them audited। मतलब वो बोल रहा है कि अगर आप 44AD4 अप्लाई होता है, नंबर 1, और नंबर दो अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन एंड योर इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स शेल रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन बुक्स, तो तब जाके आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है, ऑडिट करने की जरूरत है। अदरवाइज आप तब जाके 44AA2 को देखना है, अदरवाइज नहीं। मतलब 44AD5 कैटेगरिकली प्रिवेल्स ओवर 44AD1, मतलब ये बोल रहा है कि अगर 40 ऑडिट की बात तभी आएगी जब आप अंदर घुसकर बाहर आ रहे हो। Look at 44AD4, the way the language is drafted. When an assessee has declared profit for any assessment year in accordance with the provisions of this section, and he declares
profit of any of the 5 assessment year relevant to the previous year succeeding such previous year not in accordance with the provisions of this subsection 1, तब जाके ये सिचुएशन होगा, तब जाके उसे ऑडिट करवाने की जरूरत, तब जाके वो 5 साल तक उसे बाहर ही रहना पड़ेगा। जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपने एक बार शादी कर ली तो 5 साल तक आपको शादीशुदा रहना पड़ेगा। अगर आप 5 साल के अंदर अंदर ये कहते हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए, इन दैट पर्टिकुलर केस बॉस और आपकी इनकम जो है वो आपके डिवोर्स वाले सालों, अगर एक साल में ऑडिट करवाया, एक साल में आपने 4480 लिया, लेट्स से यू टेकन ऑडिट 4480 इन फाइनेंशियल ईयर 2021, then for 22, 3, 4, 5 and 6 you have to mandatorily be in 4480। अगर आप 4480 में रह रहे हैं 8% या ज्यादा दिखा रहे हैं तब तो दिक्कत नहीं है। तब 27 में अब वो पहला साल हो गया, डिसाइड कीजिए जाना है या नहीं जाना, शादी कंटिन्यू करनी है नहीं करनी। अगर 26-27 में बोल रहे हैं नहीं मुझे शादी कंटिन्यू नहीं करनी है, मैं रेगुलर दिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू कैन डू दैट इन माय ओपिनियन, नथिंग इज टू बी वरीड। पर आपने 20-21 में 4480 लिया था, 8% दिखाया या उससे ज्यादा दिखाया था जो आपका एक्चुअल है, फिर 22, 23, 24 3 साल में तो आपने ठीक चला कि 4480, अब आप 24-25 फाइनेंशियल ईयर में ये बोल रहे हैं कि नहीं मुझे 4480 से बाहर निकलना है, मुझे डिवोर्स चाहिए। अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो फिर 5 साल तक, आने वाले 5 साल यानी 24-25 के बाद वाले 5 साल 25, 26, 27, 28, 29, ये 5 साल तक वापस नहीं आ सकते। और सर वापस तो नहीं आ सकते लेकिन ये 5 सालों में आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। तो ये 5 सालों में ऑडिट की बात है, मतलब मेरा तो पहला साल है सर, मैंने तो कभी जिंदगी में 4480 लिया ही नहीं है, तो फिर आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं। सर मेरा टर्नओवर हमेशा 10 करोड़ 20 करोड़ से ऊपर रहा है। इस बार अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एनी रीजन माय टर्नओवर हैज बीन बिलो 1 करोड़ रुपीस एंड देन आई हैव टू गेट माय बुक्स एंड देन इन दैट केस 4480 में जाने की भले मैं एलिजिबल असेस हूं, भले मेरा एक्टिविटी एलिजिबल बिजनेस है, बट देन आई हैव नेवर ऑप्टेड इन द पास्ट, आई एम नॉट सपोज्ड टू गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। अब बात करते हैं 4480A की। सर ये 4 साल 5 साल 1 साल शादी करी, 5 साल शादी रखी, बीच में डिवोर्स लिया, वो सारी कहानी 4480 में है, 4480A में कहीं पर नहीं है। सीधा सीधा हिसाब है, रात गई बात गई। मैं पिछले साल के बारे में कुछ सोचता नहीं, करंट ईयर की बात करता हूँ। टर्नओवर का 50% से कम है, मुझे देखना है टर्नओवर के 50% से कम दिखा रहा हूँ और मेरी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ऑडिट करवाना है। टर्नओवर के 50% से ऊपर दिखा रहा हूँ तब तो मुझे ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, मैंने पिछले सालों में क्या करा था मुझे उसमें देखने की जरूरत है। दूसरी चीज, मान लो कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, 44AA1 में कवर होता हूँ तभी जाके ये अप्लाई होगा। अब मैं 44AA1 में मैं कवर हो गया, 44AA1 का मेरा टर्नओवर का इनकम हो गया 50 लाख रुपीस, सॉरी 40 लाख रुपीस मेरा टर्नओवर था। अब मान लो मेरा 8 लाख रुपया मेरा हो गया ये डेरिवेटिव, तो क्या वो 8 लाख डेरिवेटिव का इनकम है, इसलिए मैं 44AA में नहीं जा पाऊंगा? ऐसा कहीं पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर। आप 44AA प्रोफेशन का जो इनकम है 40 लाख, उसके लिए आप बिल्कुल चाहिए, आपको जाना ही पड़ेगा वहां पर। आप 44AA में जाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन गो टू 44AA, यू कैन गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट, यू कैन से 50%। और 8 लाख रुपए जो है उसके लिए आपको 44AA2 देखना पड़ेगा। 44AA2 ये कह रहा है क्योंकि आपका पहला साल था, टर्नओवर 25 लाख से बढ़ा नहीं, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके लिए भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं। तो 44AA1 आपके प्रोफेशन के लिए होगा, लेकिन ये जो 8 लाख डेरिवेटिव है वो नीचे 44AA2 में जाएगा। अगर वो 8 लाख वाला मान लो 80 लाख होता, इन दैट पर्टिकुलर केस बिजनेस एंड प्रोफेशन आर डिफरेंट। पारिजात का जो जजमेंट हमने अभी डिस्कस करा वहां पे लिखा हुआ है कि क्लॉज ए और क्लॉज बी दोनों लिमिट अलग अलग है। तो वो 40 लाख की लिमिट है, वो 40 लाख की लिमिट के 50 लाख की लिमिट है, जिसमें मेरा टर्नओवर 40 लाख का था प्रोफेशन का, मैं 40 लाख का 20% दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं 4480A में। लेकिन क्योंकि मैं 44AA1 वाला प्रोफेशन कर रहा हूँ तो 4480 तो मुझे अप्लाई होता नहीं, मुझे बाहर फेंक दिया 4480 से तो पूरा का पूरा। तो मेरा जो बिजनेस इनकम था 80 लाख रुपए का F&O वाला, वो 4480 में नहीं जा पाएगा। हाँ, क्योंकि वो 25 लाख से टर्नओवर बढ़ गया तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। 1 करोड़ से ऊपर गया नहीं तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि F&O है तो उसमें कैश होता नहीं। तो ऑब्वियसली आप अपने 5% से ऊपर भी अगर आप जाएंगे तो भी इन दैट पर्टिकुलर केस आपको 10 करोड़ 5% की लिमिट से ऊपर नहीं जाएंगे तो भी आपको 10 करोड़ से तक तो दिक्कत नहीं आएगी। तो वहां पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज keep this points in mind. So I think I have covered almost all the issues. Few issues are yet to be taken care of, like whether what should be the turnover for the purpose of section 44AB and AD. I would be preparing a separate video
to discuss that what should be the turnover for the purpose of 4480. Should it be inclusive of GST or should be exclusive of GST? If you have any other queries, doubts, concerns with respect to section 44AB, you can drop those things in comment, and I would also propose if you know, we can figure out a particular time when we can be live on YouTube, and when this joint discussion takes place where around 1 hour or so, and probably we can discuss this all issues that you also may have with respect to 44AB and AD. So I tried to, this became a little longer video because I wanted to cover almost all the points which are relevant here. But as of this moment, I tried to cover almost all videos. If I have spoken something, anybody has felt being hurt, I would really convey my apologies. I have given all my views. These all are my personal views, and you may take your chartered accountant, tax consultant, tax advocate's opinion before going further. All your risks and all your rewards are associated with your decisions, which you have to take in consultation with your tax consultant and tax experts. I gave something which was my personal understanding of the law. Thank you very much. With this, I conclude my session with a request that if you have comment, doubts, queries, please put it in the comments, and let's also figure out some time where we can join, and we all can be on, we all can discuss this issue on YouTube, and we can be on YouTube live or something like that, or some maybe on Zoom platform, and then we can also discuss this, and we can conclude those particular issues so a proper communication reaches at a proper level. So with this note, I conclude the session. Wish you all a great time ahead. Take care and take good care of yourself. Thank you very much.